या तो एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल कि ये टेम्परेचर ये ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इवन दो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन भी तो है। अगर वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन है, इसका मतलब टेम्परेचर इसमें यहाँ पे हीट ज्यादा है कंपेरेटिवली यहाँ पे। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर निगेटिव कैसे हो सकता है? उसका तो हाई होना पड़ेगा ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो ना दो एंड पे जो टेम्परेचर है, उससे ज्यादा टेम्परेचर इनसाइड होना चाहिए। तभी ना रेट ऑफ हीट जनरेशन का टर्म है, क्योंकि एनर्जी तुम ऐड कर रहे हो ना। यहाँ पे एनर्जी अगर मान लो E1 है, यहाँ पे एनर्जी E2 है, तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पे E3 है, तो E3 हैज टू बी ग्रेटर देन E1 ना। मतलब एक ग्रेडियंट आएगा जहाँ पे E3 वुड बी ग्रेटर देन E1, और उसके बाद वो घटना चालू होगा। बट दिस एनर्जी वुड बी बाउंड विद इन दिस थिंग। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि since the temperature is quadratic, that means we are going to have something called as Tmax at some x value. Let's say that value is x star. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो मान लो इस x स्टार पे हमें Tmax मिलेगा। सो इन एडिशन टू दिस क्वेश्चंस, ये जो चार क्वेश्चन है, एक और चौथा पॉइंट ऐड हो जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tmax एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्टार। ठीक है। गिवन दैट टेम्परेचर एट x इक्वल टू x स्टार इज Tmax। समझ रहा है ना सबको? यस और नो? बताओ भाई। ओके। ओके। सो नाउ, ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। सो नाउ लेट अस गो बैक टू अवर एक्सप्रेशन विच सेज दैट d2t/dx² was माइनस क्यू डॉट बाई के। ठीक है। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं विच इम्प्लाइज dt/dx इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट बाई के इंटू एक्स प्लस C1, एंड टेम्परेचर इज नथिंग बट माइनस क्यू डॉट बाई के x² by 2 प्लस C1x प्लस C2। नाउ बिफोर वी प्लग इन द बाउंड्री कंडीशन, अगर हमें ये एक्स स्टार Tmax निकालना है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? वी नो कि ये यहाँ इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। राइट। तो इसका मतलब एट dt/dx व्हेन x इक्वल टू x स्टार इज नथिंग बट जीरो। इसका मतलब क्या बोलेंगे? इसका मतलब बोलेंगे हम माइनस क्यू डॉट बाई के इंटू एक्स स्टार प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स स्टार इज नथिंग बट माइनस C1, और इसको बोलेंगे C1 इज इक्वल टू प्लस क्यू डॉट बाई के इंटू एक्स स्टार, which basically means that x star is nothing but k by q dot into C1। ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टिल वैल्यू ऑफ C1 is unknown, right? Now we do need to calculate what is the value of this C1 and C2। तो इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे to calculate। we know कि टेम्परेचर, ये वाला एक्सप्रेशन जो है माइनस क्यू डॉट बाई के x² by 2 प्लस C1x प्लस C2 to calculate
C1 and C2, we will use boundary conditions, right? Now, what are the boundary conditions? Boundary conditions are, we'll get it from this diagram. Here at x equal to minus L, temperature is T1, and at x equal to plus L, temperature is T2. So we'll just plug those things here. At T1 is nothing but minus Q dot by K minus L square by 2 plus C1 into minus L plus C2 or T2, because now why? Let me use a different color for this. T1 is equals to minus Q dot by K minus of L square, sorry, minus of L square by 2 plus C1 into minus L plus C2, because temperature at x equal to minus L is T1. ठीक है. Second point, let's say T2, which is minus Q dot by K L square by 2 plus C1 into L plus C2. Now why is that? Because at x equal to at x equal to plus L, temperature is T2. ठीक है. Now इसमें unknown क्या है? These two things are unknown. This is unknown, this is unknown, this is unknown, and this is unknown. Okay, so now we have two equations. We have, let's say this is equation A, this is equation B. For A and B, we have two equations and two unknowns. So we should be able to solve this system, right? So we should be able to solve the system. ठीक है. सो नाउ ऐसे करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये निकल जाएगा. दिस विल कैंसिल इट आउट एंड वी विल गेट स्ट्रेट अवे वैल्यू ऑफ C2. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू दिस हम क्या करेंगे? A प्लस बी. A प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू माइनस Q डॉट बाई K into L square by 2. Let me use same color. ये एक एक्सप्रेशन रहेगा. ठीक है. ये एक में ये जो टर्म है, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें आएगा फिर हमारा ये राइट. और यहाँ पे 2C2, दिस टर्म विल गेट एडेड टू दिस प्लस, लेट मी यूज या प्लस 2C2. इसका मतलब T1 प्लस T2 इज गोइंग टू बी माइनस Q डॉट बाई K इंटू L स्क्वायर प्लस 2C2. इसका मतलब C2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाई 2 प्लस Q डॉट बाई 2K L स्क्वायर. ठीक है. नाउ यू पुट दिस एक्सप्रेशन in either equation A or equation B, you will get value of C1. ठीक है. From A, B and C, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं. I'll just give you the answer कि
C1 जो है, C1 विल कम आउट टू बी क्या है, C1 आएगा T2 माइनस T1 बाई 2L। ठीक है, now अभी just you just have to put the value of C1 and C2 in any of this in this expression। ये वाला जो टेम्परेचर वाला जनरलाइज एक्सप्रेशन है, ये वाला, इसमें जब तुम वैल्यू डालोगे तो यू विल गेट टेम्परेचर इज इक्वल टू Q डॉट बाय L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल होल स्क्वायर प्लस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स बाय एल प्लस T1 माइनस T2 बाय 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार यस और नो बोल दो, इसमें कुछ डाउट? बताओ यार, anybody has any doubt in this? I am audible, right? Yeah. Is this clear to everyone? हाँ ना बोलो भाई। राधिका, दीपाली, अंशिका, एनीबडी? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. या या थैंक यू। सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो नाउ once we get this temperature we have to find, okay, now once we get this temperature, now the next question which we have to do is we have to find, just a second, या सो अभी हमें टेम्परेचर तो पता चल गया और हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो यही था हमारा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा ऐसा, where this is insulated, ठीक है। This is temperature T1, this is temperature T2, and let's say this is at x equal to 0, this is at x equal to plus L, this is at x equal to minus L, okay, this is at x equal to plus L, x equal to minus L, and then the temperature profile is this quadratic, let's say ऐसा आएगा ये। It is not linear, it's parabolic, like this। ये तुम्हारा आ जाएगा T2। नाउ हमें x max की वैल्यू पता है, व्हाट इज x स्टार हमने निकाला था, x स्टार की वैल्यू थी k by q dot into C1, राइट, दिस वन। So k by q dot into C1, where we calculated value of C1 as this one, T2 minus T1 by T2 minus T1 by 2L, where let's say this is T max, this is T max, and this is x star। So using this expression what we get is x star क्या हो जाएगा हमारा, x star is nothing but equal to क्या हो जाएगा, k by q dot multiplied by 2L by
T2 minus T1. Oh, sorry. X star is nothing but K by Q dot into T2 minus T1 by 2L. ठीक है, अगर इसको तुम वो करोगे X star by L is nothing but K by Q dot into T2 minus T1 by 2L square. And when you put this T max हमें निकालना है, तो when you put या इस एक्सप्रेशन में, let us call this as equation number D or equation number E, and call this expression as equation number F. So from E and F, we have temperature at x equal to x star. We also know that this is nothing but T max. तो T max तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर हमें ये पता है, तो T max is nothing but QL square by Q dot L square divided by 2K. Let me use a different color. T max is equals to Q dot by L square by 2K into 1 minus x star by L whole square plus T2 minus T1 divided by 2 into x by L or x star by L plus T1 minus T2 by 2, T1 minus T2 by 2, where x star is equal to, or x star by L is equals to K by Q dot into T2 minus T1 by 2L square. When you put this value of x by L into this expression, जो फाइनल आंसर आता है, that I'll tell, हमारा जो T max आता है, T max, let me write it here. Your T max comes out to be Q dot L square divided by 2K into 1 minus, oh, you don't have to solve this. मेरे पास इसका solution, I don't have it. So this is what is your Q max. Sorry, T max. ठीक है, तो now हमें क्या पता चल गया अभी? We have answered 2 of the question. Now the first question was, what is the temperature? What is the temperature profile? This we calculated, right? ये हमारा temperature profile है. We also calculated. हमारा T max हमने calculate किया, हमने X max calculate किया. Now what we need to do is, what is T max and X star, ये हमें पता चल गया. अभी हमें निकालना है what is flux. तो फ्लक्स क्या है हमारा? तो फ्लक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड, लेट्स से फ्लक्स. सो फ्लक्स क्या हुआ तुम्हारा? फ्लक्स हमें निकालना है, और चौथा हमारा रेट निकालना है. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड व्हाट इज फ्लक्स. फ्लक्स इज नथिंग बट माइनस के डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, एट एनी एक्स. ठीक है, नाउ वी नो दैट डी टी बाई डी एक्स क्या है हमारा. अगर इस एक्सप्रेशन को तुम डेरिवेटिव लोगे, या फिर यहाँ से हमें पता चल जाएगा व्हाट इज डी टी बाई डी एक्स. डी टी बाई डी एक्स इज दिस. सो फ्लक्स हमारा हो जाएगा माइनस के माइनस क्यू डॉट बाय के इंटू एक्स प्लस सी वन, राइट. क्यू डॉट बाय के, ये यहाँ से आ रहा है, राइट. क्यू डॉट बाय के इंटू एक्स प्लस सी वन, माइनस क्यू डॉट बाय के इंटू एक्स प्लस सी वन, एंड वी नो दैट सी वन इज इक्वल्स टू, क्या है सी वन?
C1 is this T2 minus T1 by 2L, this value, T2 minus T1 by 2L, T2 minus T1 by 2L. Therefore, flux is minus K minus Q dot by K into X plus T2 minus T1 by 2L. Right? So we got flux also. हमें हमारा फ्लक्स भी मिल गया. एंड व्हाट इज रेट? रेट तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा. रेट इज नथिंग बट फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया. या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is equals to minus K or flux multiplied by area, right? So rate is equals to minus K into area. Let's say the cross sectional area is A into minus Q dot X by K plus T2 minus T1 by 2L. ये हमारा हो गया एरिया. Right? Anybody has any question? कोई डाउट है किसी को? Everything is clear? Yes, sir. ठीक है ना, समझ रहा है ना what is happening? ठीक है. So now you have this. Now let me draw this picture again. Let me copy this one. Let me paste it on a new slide. Okay. You don't know it. Now using, or I should put it here only. Let me copy it again. ठीक है, ये हमारा डायग्राम है. We know that this is the flux, how we calculate, and this is the rate, and this is the diagram. Now what I want you guys to do is, I want you guys to find out, or let me do it only. What is the flux at this surface? इस surface पे flux क्या है? Flux at or let me say, what is the relation, or let me ask this question. Yeah, यहाँ पे लेट से इस सरफेस पे लेट से फ्लक्स इज क्यू डबल डैश, लेट से 1 और क्यू डबल डैश एल, क्यू डबल डैश एट एक्स इक्वल टू माइनस एल, एंड लेट से फ्लक्स एट दिस पॉइंट is let's say q1, or let me do this is flux, let me write it down. Let's say flux at x equal to minus l, let's say is q1, or let's say f1, and flux at x equal to plus l is let's say f2. So what I want you guys to find out is what is the relationship between f1 and f2. You can do it as a homework problem. So whether f1 is greater than f2, or f1 is less than f2, or f1 is equal to f2, right? So this is a problem which you can try for homework. Okay. Yeah, what I will tell you, let me tell you only. F1 is going to be what? F1 is uh, q dot l minus k into t2 minus t1 by 2l. बस कुछ नहीं,
x की जगह l डाला है, बराबर, और k मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, राइट। एंड F2 is nothing but minus q dot by l minus, or rather plus, k into T2 minus T1 by 2l. ठीक है, now when you do F1 plus F2, you end up with minus k into T2 minus T1 by L. And when you do F1 minus F2, you end up with 2q dot L. ठीक है, these are also important things which you can remember. Okay. Now given, ठीक है, तो हमने basically we have answered all the 4 questions. We have answered what is the temperature profile. We have answered what is Tmax and X star. We have answered what is flux, and then we have also answered what is the rate of heat transfer. Let us now summarize into the new slide where we have paste, and we have this question, that we have this system, and what we are asked is, we are asked what is the temperature. Let me use green color, so temperature, let me just copy paste. हमें पूछा गया था टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है. We told that this is the temperature profile. Okay. Second one was this one. What is the maximum temperature, and at what point it occurs? Yeah. So this is the value for Tmax. So this is the answer to question number 1. This is the answer to question number 2. The answer to question number 3 is this one. What is the flux? So this is the flux, and this is the rate of heat transfer. Okay. Okay, now I have to like this. So this is the answer to 3, and this is the answer to rate. So we know all the things which we wanted to find out. Okay. Now now that given that I have solved and this example, now what I want you guys to do is, I want you guys to solve this example. This example. अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें बॉन्डिंग कंडीशन बस ये चेंज हुआ है कि now we are having here we had different temperatures, right? So now because they were different temperatures, heat transfer, because this was given as higher and this was given as lower, so heat transfer direction was along this direction, right? Now what is going to be the energy balance, what are going to be the boundary condition, what is going to be the temperature profile, what is the x max and x minimum when the boundary condition changes, that both the surfaces have the same temperature. You try this just now.
समझ गया ना? ये क्वेश्चन समझ गया ना सबको? व्हाट यू हैव टू डू। यस सर। ये समझ गया ना? यू हैव टू नाउ सिमिलर, जैसे हमने यहाँ पे इस इसमें किया है। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, आई वांट यू गाइस टू एग्जैक्टली सेम मेथोडोलॉजी लेके मुझे ये बताओ कि एनर्जी बैलेंस क्या होगा। सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन में बता देता हूँ। बाउंड्री कंडीशंस आर गोइंग टू बी लाइक at x equal to minus L, temperature is going to be Ts, and at x equal to plus L with temperature Ts है। ठीक है? So now uh, I want you guys to find out what is this temperature profile and what is this x max and x minimum using similar concept which I have done। अभी कर मतलब can you guys try? I'll just give you a couple of minutes, हाँ? 5 मिनट दूंगा। You just try what is the expression and how would you cross check it, जो तुम्हारा है सही है कि नहीं। यहाँ पे तुमको बस T1 और T2 को सेम रखना है एज अ क्रॉस चेक। ठीक है? बट ट्राई टू डिराइव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे हमने एनर्जी बैलेंस करके किया। जस्ट ट्राई टू डिराइव एंड टेल मी व्हाट इज द टेम्परेचर प्रोफाइल एंड व्हाट इज दिस एक्स मैक्स, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस एक्स मैक्स एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। आई जस्ट गिव यू 5 मिनट्स टू सॉल्व इट। ठीक है? ओके? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके, यस ट्राई टू आंसर, वी देन विल डिस्कस। या मैं पूछूंगा, आएगा। आया किसी का? लेट मी जस्ट डिस्कस।
अंशिका हुआ? Or do you need more time? Or should I discuss? Let me just discuss. तुम्हारा जो जनरलाइज बैलेंस आएगा यही आएगा, क्यू डॉट डेल टू टी बाय के इज इक्वल टू 1/α dou t by dou t. The expression is going to remain the same, but here the boundary conditions are at x equal to minus L, temperature is Ts, and at x equal to plus L, again temperature is going to be Ts. Now, when you plug in all these things, what you end up is you end up with this expression, okay, which tells the temperature profile. Let me use different color. Yeah, temperature is going to be again quadratic, q dot L square by 2k into 1 minus x by L whole square plus Ts. So we see this is the temperature profile, and we see that that x star comes out to be at 0, and T max comes out to be as q dot L square by 2k plus Ts. Okay. इसका मतलब जो टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पे रहेगी, can copy, paste, yeah, temperature profile which we are going to observe is going to be like this. ठीक है, लेकिन that this is x star and this is T max, लेकिन for this question it was given that this is temperature T1 and this is temperature T2. That means it was very evident that heat is going to get transferred from left face to right face, बराबर, क्योंकि heat is going to transfer from surface which is at a higher temperature to at a lower temperature. तो ये surface का temperature हमें पता है, temperature T1 जो ज्यादा है, ये temperature का T2 है. There is difference in temperature. इसकी वजह से हमने इस केस में हमने लिया था कि T1 बड़ा है, राइट. सो हीट ट्रांसफर ऐसे जाएगा. अगर इन इन रिवर्स के जब T2 बड़ा होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर T2 ऐसा होता और T1 ऐसा होता, तो इट वाज वेरी एविडेंट कि हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होता, बराबर. लेकिन यहाँ पे दो वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक प्रोफाइल, क्वेश्चन तो ये है कि जब बोथ द सरफेस आर एट सेम टेम्परेचर, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. कैसे हो रहा है हीट ट्रांसफर? कोई आंसर देना चाहेगा? आंसर इसका ये है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट, सो क्यू डॉट इज द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है. तो टोटल हीट जो होगा तुम्हारा आएगा क्यू डॉट मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 2L. तो हाफ ऑफ दैट विच इज नथिंग बट क्यू डॉट ए एल, जो आधा हीट टोटल तो ये आएगा क्यू डॉट इंटू ए इंटू 2L, बट हाफ ऑफ दैट is going to get transferred in this direction and half of that heat is going to get direction in this direction. समझे? तो ये यहाँ पे तुम्हारा आएगा q डॉट ए एल, और इस डायरेक्शन में तुम्हारा आएगा q डॉट ए एल. एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? इज वेरी क्लियर कि ये टेम्परेचर हाईएस्ट है और ये टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर है. तो दिस इज ऑल्सो
हीट ट्रांसफर का जो बेसिक knowledge है और intuitive understanding also tells us that heat should get transferred from this direction to this direction for the half of the slab, and for other half of the slab heat should get transferred in this direction. ठीक है. और अगर तुमको ये तो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होगी. इफ यू वांट टू कंप्यूट मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली जब तुम इस सरफेस पे फ्लक्स निकालोगे, जैसे फ्लक्स एट x इक्वल टू प्लस है और फ्लक्स एट x इक्वल टू माइनस है, ये जो दोनों फ्लक्स है, यू विल फाइंड दैट दीज आर एग्जैक्टली इक्वल, ओनली डायरेक्शन अलग होगा. तो फ्लक्स एट x इक्वल टू माइनस एल, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव. तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा दैट वुड बी क्यू डॉट इंटू एल, बिकॉज दिस इज फ्लक्स. हाँ. और अगर तुम यहाँ पे फ्लक्स निकालोगे, और सॉरी दिस इज माइनस बिकॉज डायरेक्शन इज नेगेटिव, और अगर तुम यहाँ पे निकालोगे फ्लक्स, तो दैट इज गोइंग टू बी क्यू डॉट इंटू एल. अगर तुम रेट निकालोगे, रेट rate at x equal to minus L, this is going to be minus Q dot L into area, which is nothing but minus Q dot AL. और इस डायरेक्शन में अगर निकालोगे, इस स्लैब में, ये डायरेक्शन में, you will find that rate is at x equal to plus L is going to be Q dot AL. और total is still total flux or total rate is going to remain same, that is Q dot L minus में plus Q dot L. The total amount of heat, quantity of heat is still going to remain 2 into Q dot L, which is same as this one. Yeah, heat total, sorry, total, no total. And what was this? Heat of, I don't know what is this. ठीक है. तो ये तुम्हारा हो गया इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग. I hope this is clear. So let me just do a recap what we have studied today. So we have studied one-dimensional system, Cartesian coordinate system, with net rate of heat generation not equal to 0. We have found out its temperature distribution. We have tried to find out what is the flux of heat transfer. We tried to find what is rate of heat transfer. And then we also studied some temperature profile में वो था quadratic था, इसलिए हमने x star भी निकाला और T max भी निकाला, और उसका intuitive understanding also we tried to do. or intuitively predict the behavior. Behavior of system. So in tomorrow's or the next class में हम एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, एक और प्रॉब्लम फॉर वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. जिसमें बाउंड्री कंडीशन चेंज होगा. सो हियर हमारा बाउंड्री कंडीशन हमेशा था कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ है. इन द नेक्स्ट क्लास विल सी कि अगर ये जो सरफेस है तुम्हारा, ये सरफेस अगर ये इंसुलेटेड होगा, इफ देयर इज दैट बाउंड्री कंडीशन, तो इन दैट केस हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी वन एग्जांपल, एंड देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम सेट एग्जांपल्स. ठीक है. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हम प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल सॉल्व करेंगे वन बाय. ठीक है. किसी को कुछ डाउट? No, sir. सही ना, समझ गया ना.
चलो, थैंक यू, ठीक है। सो आई क्लोज दिस क्लास। ठीक Yes. है, थैंक यू। इंडिया।